Hello and welcome back, all the viewers. Today we are going to start with another concept, that is the heating effect of electric current from Unit 2, Electricity, Magnetism and Semiconductor from Basic Science course. We have already talked about the term that is electric current. In a simple language, we can say it's the flow of free electrons through an conductor, right? Now, this heat is produced due to the passage of this electric current through an conductor, and therefore it is known as heating effect of electric current. Now we all know that when a heating is produced, and that is due to the passage of this electric current. इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो हमने पहले भी देखा है कि इट्स अ फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं थ्रू दैट कंडक्टर, क्या होता है, दे कोलाइड विद द नेबरिंग पार्टिकल्स, या कोलाइड होने की वजह से क्या होता है, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ हिंडरेंस दैट रेस्ट्रिक्ट्स द पैसेज ऑफ द करंट थ्रू अ कंडक्टर. तो वहाँ पे सारी जो एनर्जी है वो अक्यूमुलेट हो जाती है, सो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी. या जैसे हम घर में हमारे मेनी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, लाइक द हीटर, द केटल, या इसमें क्या होता है एक्चुअली, electric energy gets converted into the heat energy. So part of the energy gets converted into the heat energy. ओके, सो ये जो कन्वर्जन है इसको ही हम बोलने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो लेट्स डिफाइन इट दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, the conductor becomes hot after some time and that produces heat. This happens due to the conversion of some electrical energy passing through the conductor into heat energy, and this effect of electric current is called as the heating effect of current. So definition is very simple, concept भी है वो very simple है कि when an electric current, जब कोई भी कंडक्टर से पास होता है तो क्या होने वाला है, part of the electrical energy is getting converted into the heat energy, and that is nothing but the heating effect of electric current. जो हम डे टू डे लाइफ में हमारे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, या लाइक द आयरन, द गीज़र, द हीटर, these are the applications of the heating effect of electric current only. Now this heat, whatever heat is produced, that depends on that material, कि कितना ज़्यादा रेजिस्टिव मटेरियल है या कम रेजिस्टिव मटेरियल है. ओके, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने वाली है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विल गेट प्रोड्यूस. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ दैट conductor. Okay, now let's see or let's derive the formula for this heat which is produces when electric current is passing through a conductor. तो यहाँ पे आपको एक electrical circuit दिखाई दे रहा है which consists of the battery, the connecting wires which are acting as a conductor. There is a B. Can you see A and B? That is the conductor which we have considered here. R is the resistance of that conductor, and V is the potential difference across that conductor AB. ये ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी मेजर इट ऑलवेज अक्रॉस विच इज़ कनेक्टेड पैरेलल टू दैट कंडक्टर. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो जो हीट प्रोड्यूस होने वाली है कंडक्टर में वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो फॉर दैट कंसिडर आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ए बी which has a resistance R for time small t. Okay, or you can assume it as a capital T also, that doesn't matter.
Consider that the potential difference applied across its end is V. Now we all know that we have already talked about the potential energy, yeah? That is the total amount of work done in moving a charge q from point A to point B. तो यहाँ पे source है which is the battery, okay, which creates the imbalance, okay. इसकी वजह से क्या होने वाला है, potential create होने वाला है, and in that way the current will start flowing through that electrical circuit. Now as soon as it comes to the point A, वहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, कंडक्टर स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट हैज़ अ सर्टन रेजिस्टेंस, बराबर है. उसको रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होने वाला है, जितना फ्लो था करंट का बिफोर रीचिंग टू पॉइंट ए, नाउ दैट विल चेंज, बिकॉज ये ए बी कंडक्टर को रेजिस्टेंस है. नाउ a small amount of current will pass because it has a resistance. समझ में आया. तो certain amount of work done is required to move that charge from point A to point B, yeah, and that work done, that is W, is equal to Q into V. Now we know that charge is equal to current into time, or you can also say that current is equal to charge upon time, and हमें Ohm's law से पता है V is equal to IR. So we will put the value of charge and potential difference into this formula of work done, which is equal to Q into V. And in that way, what we are getting is work done is equal to I square RT. Now ये जो work done है ना, to move and charge from point A to point P, that is converting electrical energy into the heat energy. So we are going to replace that work done with the heat produced, and therefore work done, which is equal to heat produced, that is equal to I square RT. ये क्या है? This is the heat I square RT produced when a current is passing. I amount of current is passing through conductor AB, which has a resistance of R for time T. समझ में आ गया. द डेरिवेशन और द फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वेरी सिंपल, ओके. यहाँ पे हमें क्या अज्यूम करना है, सिर्फ कि एक कंडक्टर है, उसको रेजिस्टेंस है, तो सम वर्क डन हैज़ टू बी required to move that charge from one place to the another place, and simply we are substituting the values of charge and potential difference which we have already studied, okay. So in that way what we are getting is heat which is produced is equal to I square RT, and this is also known as Joule's law of heating, okay, because क्यों इसे Joule's law of heating बोलते हैं, let's understand this. So ये जो effect है, heating effect of current, that was studied experimentally by Joule in 1941. After doing his experiment, Joule came to the conclusion that heating effect of an electric current, it depends on three factors, जो हमने फॉर्मूला से भी देखा है कि heating effect it depends on the resistance, that is R of the conductor, बराबर है. हर एक जो कंडक्टर है which is made up of different material, तो ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड होगा उस मटेरियल के. हायर द रेजिस्टेंस मोर हीट जो है वो प्रोड्यूस होने वाली है. कम अगर रेजिस्टेंस है तो लेस अमाउंट ऑफ हीट विल गेट प्रोड्यूस्ड. सो पहला देखा कि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो पहले किस पे डिपेंड है, दैट इज द रेजिस्टेंस. सेकेंड, द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज. जितना ज़्यादा टाइम करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होने वाली है. एंड थर्ड फैक्टर कौन सा है, दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट. द हायर द करंट द लार्जर द अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड. सो हमें क्या पता चला कि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, टू द टाइम एंड टू द रेजिस्टेंस. Okay, so
let's define the statement of the Joule's law. That is, when current flows through a conductor, the heat produced in a conductor is directly proportional to the product of the square of current, resistance of the conductor, and the time for which the current is passed, and therefore H, which is equal to I square RT. Now, what are the applications of this heating effect of electric current? तो वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो हम हमारे घर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक बल्ब. या इलेक्ट्रिक बल्ब, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी into the heat energy as well as into the light energy. Then electric iron, okay, जो हम प्रेस करने के लिए, क्लॉथ प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, रूम हीटर है, गीजर्स है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, all of them are based on this heating effect of current. Another जो concept है, that is electrical energy. We are going to talk about a few applications in detail after this, okay? Before that, let's see what is the electrical energy and power. Electrical energy, okay? So the work done in pushing a charge around an electrical circuit, that is given by W is equal to VI into T. And power हमें पता है, that is W upon, that is work done upon time T. So which will be V into I. And the electrical power consumed by electrical appliances is given by power is equal to potential difference into current. And just by the Ohm's law, we can do the variations in the formula. Therefore, power can also be I square R and also be V square upon R. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, ये जो फॉर्मूला है, पावर का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस इन डिटेल. तो जो पहला एप्लीकेशन है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब. तो इलेक्ट्रिक बल्ब का एप्लीकेशन समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इनसाइड दैट इलेक्ट्रिक बल्ब, which material is used as an resistive material, okay, so that generates that heat energy. So क्या होता है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक मेटालिक वायर जो टंगस्टन से बनाया होता है. टंगस्टन इज केप्ड अंडर एन इनर्ट एनवायरमेंट with either vacuum or neutral gas to avoid the reaction, okay? So whenever the current tends to flow through that tungsten wire, it gets heated and tends to emit the light. Most of the electric power which is drawn in the circuit from an electric source tend to get dissipate in the environment in the form of heat and remaining gets emitted in the form of the light energy. समझ में आ गया? तो मेन जो था वो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी था. There is a tungsten wire used in the bulb that generates the heat. So part of the amount is converted into the heat energy and part of the electrical energy gets converted into the light energy. So this is one of the application of heating effect of current. Another जो है, that is electric heater. So when it comes to the electric heater, यहाँ पे कौन सा रेजिस्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है? तो दैट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर is used in the form of a coil. This coil is then wound on the grooves that are made up from either a ceramic material or china clay. So whenever the current flows through the coil, it gets heated, which in turn used in heating the cooking vessels. So this is the another application. Apart from this, there are many applications of this heating effect of electric current. So this is what about the Joule's law of heating, or you can say the heating effect of current. So if you like my channel, please do subscribe. Please press the bell icon for the new updates. Thank you.